Hello students, welcome to our next lecture of cell cycle and cell division. In our previous videos, we had completed a very much important cycle, that is mitosis, cell division, and the introduction of meiosis has been completed in the previous lecture. Now in this lecture, we will discuss in detail about the meiosis cell division. As we know that the meiosis cell division is going to completed in the two steps, that is meiosis 1 and meiosis 2. It is the reductional division. Firstly, we are going to discuss about meiosis 1. So here is the meiosis 1 cell division. This meiosis 1 has two important steps, that is karyokinesis 1 and cytokinesis 1. Karyokinesis 1 and the next one is cytokinesis 1. Firstly, we will discuss about the karyokinesis 1. Karyokinesis means the division of nucleus, and it has the four phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Firstly, the prophase 1. We all know that the prophase 1 is a little bit longer stage and it is entirely different from the prophase of mitosis. Clear? It has many important type of processes like crossing over, chiasmata formation, synapses. Clear? These are the important processes which are very much important for the variations in the species. That's why the prophase 1 is a longer phase, which is again divided into 5 phases: lactotine, zygotine, pectine, diplotin and dikinesis. Okay, we have discussed the name of these subphases in the previous video. Let us start with the first phase, that is prophase 1. And the subphase of prophase 1 is lactotine. Before that, the interphase stage. Yes, because the cell is going to complete the interphase. Interphase means the growth phase. The growth phase is the same as the mitosis, the preparatory phase. ठीक है, इसमें जितने भी preparations होने वाली है, this is not the resting phase, this is the preparatory phase. It is divided into three subphases, that is G1, S and G2, which we have discussed earlier. So the interphase is the phase in which the cell is going to prepare itself for the next phase, that is for the division phase. So this is the nuclear membrane. This nuclear membrane is intact. So this is the nuclear membrane. Here is the centrosome. This is the centrosome. And inside the nucleus, the chromatin material is there, and we are going to start with the number of chromosome is 2n. So it is interphase having 2n number of chromosomes. 2n means 2 pairs, that is 4 chromosomes. So 2n number of chromosomes are there. 1, 2, 3 and 4. These are the 4 chromosomes. These are present in net-like structure or in the thread formation. Clear? So this is the interphase in which the cell has prepared for the next phase. Nextly, the cell undergoes in prophase 1, and the first subphase of prophase 1 is lactotine. So here is the cell. This is the cell, and the phase is lactotine, or it is also called as lactonema. Lactotine or lactonema. Here, this is the nuclear membrane which is still intact. It means there is no disappearance of nuclear membrane has started. So this is the nuclear membrane. Again here is
centrosome. This is centrosome. Now the chromosomes are going to start coiled and they looks like threads, beaded threads. ठीक है, लैक्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस और कॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हमें ये लैक्टो वर्ड मीन्स वेरी थिन एंड निमा वर्ड इज थ्रेड. सो दे आर लुकिंग लाइक वेरी थिन थ्रेड्स, द बीडेड थ्रेड्स. ठीक है, ऐसा हमें लगता है जैसे कुछ बीडेड थ्रेड्स के फॉर्म में क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू अटैच एट वन साइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक साइड में कहीं भी, द प्लेस इज नॉट फिक्स्ड, तो कहीं भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक साइड में ये फिक्स हो जाते हैं एंड दे लुक्स लाइक बीडेड. Clear? So these are the beaded threads of chromatin fibers. Nuclear membrane is still intact. So here, what are the changes takes place during this lactotin subphase? The chromatin fibers appears beaded. So here the change is chromatin fibers appears beaded and they are arranged or fixed at the nuclear membrane. ठीक है, so they are getting attached with the nuclear membrane. Attached with nuclear membrane. These chromosomes are looking like a bouquet. That's why this stage is also called as bouquet stage. This is appearing like a bouquet. So this stage is also called as bouquet stage. So here the chromosomes are going to be beaded. So these are the some important changes which are going to take place at the time of lactotin subphase. Now the cell undergoes the next subphase, that is zygotine. ठीक है, नेक्स्ट सब फेज में हम आएंगे एंड दैट सब फेज इज कॉल्ड एज zygote. Next is zygotine. So in zygotine, this is the cell. This is the cell and this is the nuclear membrane, which again intact. It is not starting disappearing. Clear? So this is the intact nuclear membrane. During this stage, this is the zygotine, and during this stage the chromosomes are starting pair. Clear? The chromosomes are going to start making pairs. यहाँ पे हमें chromosomes की pairs देखने को मिलेंगी. पिछली जो सब फेज थी लैक्टोटीन, उसमें हमने देखा था chromosomes appears like beaded. Now the pairing of chromosomes starts and the chromosome gets more condensed. ठीक है, chromosomes condense होने के बाद pairing करना start कर देंगे. So this is the one condensed chromosome. This one is the second condensed chromosome. This is the one pair and here is the another pair. This is the second pair of chromosome. So all the four chromosomes are going to make pair. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पेयर स्टार्ट हो गई. These paired chromosomes are called as homologous chromosomes. So these are the homologous chromosomes, or they are also called as dyad
और they are also called as bivalent chromosomes. ठीक है, ये जो पेयर है इस पेयर को हम डायड फॉर्मेशन भी कहते हैं और इस पेयर को हम बायवेलेंट क्रोमोसोम भी कहते हैं एंड दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. आई एम ड्रॉइंग द क्रोमोसोम सेपरेटली. क्लियर? हम एक बार रिकॉल करते हैं एस फेज ऑफ द इंटरफेज. ठीक है, इंटरफेज की एस फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है हमारे पास? दिस इज द क्रोमोसोम and each chromosome is having double DNA. DNA replication, it means one is the original DNA and another is the replicated DNA. So each chromosome is having double DNA. So this chromosome is having two arm. Clear? यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमोसोम, its structure is like this. This is the one chromosome and this is the another chromosome. ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है. लेकिन हम इसे इस तरह से ड्रॉ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड होने वाले हैं. ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिवीजन होने वाला है. तो इस डिवीजन के लिए ना फॉर द क्लियर डिमार्केशन दैट्स व्हाई वी आर ड्रॉइंग द क्रोमोसोम लाइक दिस. ठीक है, इसलिए हम इस पेयर को इस तरह से ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ से लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड होता है क्रोमोसोम, तो यहाँ से हमारे लिए इजी रहता है ड्रॉ करना. तो इस फॉर sake of easiness we are drawing like this, but the structure of this chromosome is like this because it is having the double DNA contained. Clear? ये आप ध्यान रखेंगे. तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं. This is the dyad और the bivalent chromosome. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे. यहां से ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो कुछ प्रोटीन्स से एक दूसरे से अटैच रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन अटैचमेंट है वो हमें देखने को मिलता है. सो इट इज द प्रोटीन नेटवर्क और द प्रोटीन अटैचमेंट. दिस इज द प्रोटीन नेटवर्क. नाउ दीज क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू डिवाइड फ्रॉम हियर. क्लियर? दिस इज यहां जो हमारा डायड है यहां से जो अटैचमेंट है, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस. दिस इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विच इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस. नाउ द क्रोमोसोम इज गोइंग टू डिवाइड लॉन्जिट्यूडनली. जब क्रोमोसोम्स लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड होंगे तो हर क्रोमोसोम की हमारे पास कितनी आर्म्स आ जाएंगी? 4 आर्म्स. ठीक है, लाइक दिस. आई एम डिवाइडिंग द क्रोमोसोम. This is the one chromosome and it is longitudinally divided. So this becomes like this. These are the 4 arms of the chromosome. Now it became a tetrad. This is the second one chromosome. This is the second chromosome. Clear? Now this type of structure is called as tetrad. So it becomes the tetrad. Clear? Now what are the sister chromatids and what are the non-sister chromatids? We have to know about that. Both of these are sister chromatids. Both of these are sister chromatids. Both of these and both of these. These all are the sister chromatids. So these are the sister chromatids. Means the आर्म्स ऑफ वन क्रोमोसोम. ठीक है, इस क्रोमोसोम की ये 2 आर्म, ये दोनों आर्म, इसकी ये दोनों आर्म और ये दोनों आर्म, ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. सो द आर्म्स ऑफ द वन क्रोमोसोम आर कंसिडर्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड द आर्म्स ऑफ 2 homologous chromosomes are the non-sister chromatids. Both of these are the homologous chromosomes. The arms of homologous chromosome means one arm of this chromosome and the other arm of this chromosome. One arm of this chromosome and the other is of this chromosome. These are the non-sister chromatids. Here a very most important process is going to start taking place. The process is going to begin from this stage that is called as crossing over.
this crossing over begins with the zygotine stage, but it completed in the next Pectine stage. What is the meaning of crossing over? एक चीज हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. The crossing over is always taking place between the non-sister chromatids. So यहाँ पे क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर होगा, this is going to take place in between the non-sister chromatids, the most important thing. ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ठीक है, यहां से क्रोमोसोम्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास. दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बोथ ऑफ दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वन homologous chromosome. These homologous chromosomes are comes in contact with each other and they are going to cross each other like this. Clear? तो यहां से हमें लॉन्जिट्यूडनल वे में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं यदि इसका एंगल चेंज कर दूं, मैंने यहां से इसका एंगल चेंज कर दिया, तो यहां पर ये क्रोमोसोम अभी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यहां से हमें एक्स फॉर्मेशन, एक्स टाइप का स्ट्रक्चर क्रॉस करते हुए क्रोमोसोम्स की आर्म्स दिख रही हैं, लॉन्जिट्यूडनली यदि हम देख रहे हैं. लेकिन यदि मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, तो एंगल चेंज करने पे क्या हो रहा है? ये क्रोमोसोम्स अभी अलग अलग है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है. जब ये क्रोमोसोम्स की आर्म्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, देन ओनली द क्रॉसिंग ओवर विल टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी, क्रोमोसोमल आर्म्स के कांटेक्ट में आने की जो प्रोसेस है, that is called as crossing over, and this is going to completed in the next stage, that is called as Pectine stage. It starts with the zygotine. ना इस तरह से हमारे पास क्रॉस ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा. जाइगोटीन की स्टेज में ये क्रॉस ओवर हो जाएगा, और ये जो क्रॉस ओवर स्ट्रक्चर बनता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज कियाज्मा और कियाज्मेटा फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस. क्लियर? तो हम इसे यदि इस तरह से देखेंगे तो अभी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे. तो हम कह सकते हैं, काफी सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, जाइगोटीन इज द स्टेज एट विच द क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, बट जाइगोटीन इज द स्टेज इन विच द क्रॉसिंग ओवर इज ओनली बिगिंस. इट डजंट कंप्लीटेड इन द जाइगोटीन स्टेज. It gets completed in the next stage, that is called as Pectine stage. So here the changes which are going to take place during the zygotine stage. अब zygotine stage में आपके पास क्या क्या changes हुए हैं? First one is pairing of homologous chromosome is going to start it. So I am writing here. Changes. First one is pairing of homologous chromosomes. Second one is longitudinal splitting, of chromosomes are going to take place, and the tetrad formation is also going to takes place. So here the tetrad formation is also taking place. Tetrad formation. And between two homologous chromosomes, a synaptonemal complex is formed to hold the chromosomes. है ना, यहाँ पे जो आपको बताया था, जो नेटवर्क बनता है, प्रोटीन नेटवर्क. ठीक है, तो प्रोटीन नेटवर्क फॉर्मेशन हो जाता है टू होल्ड द क्रोमोसोम्स. The synaptonemal complex is going to be formed. So here the formation of synaptonemal complex has taken place. So these are the some important changes in the structure of cell during zygotine subphase. So आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, during zygotine subphase crossing over is going to begins, but it is completed in the next Pectine stage. Now come to the next stage, that is called as Pectine stage. और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन एग्जाम्स में
नीट वगैरह की एग्जाम्स आप फाइट करते हैं, वहां पे हमें एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, इन विच सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड. सो द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड इन द Pectine subphase of the prophase 1. So here is the next subphase which is called as Pectine. Clear? During Pectine, what is going to take place? So this is the cell, and here again the nuclear membrane is intact. It means it's still complete and not start disappearing. So this is the nuclear membrane. Now the chromosomes, this is the one pair of homologous chromosome. Crossing over have started. So this is the one pair. I am writing the another set of chromosome with the different colored chalk. This is the another pair of chromosome, and here the crossing over has started. It means one arm of the chromosome is going to cross over. Clear? So this is the crossing over or the chiasmata formation. Clear? ये हमें जो दिख रहा है, this is the chiasmata formation. ये हमारे पास एक homologous pair है, और हमारे पास न्यूक्लियस में कितने 2 homologous pairs are there. So I am drawing the one more pair. This is the another pair of homologous chromosome, and this is the second chromosome with different color, so we can see the crossing over clearly. Clear? So this is the different colored next chromosome, and here is the crossing over. This is called as chiasma or chiasmata. Clear? So this is called as chiasma or chiasmata. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रोमोसोम्स इस जगह से एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं? सपोज दिस इज द वन क्रोमोसोम ना, मैं यहाँ पे लार्ज करके दिखाती हूँ आपको. तो दिस इज द वन क्रोमोसोम. Clear? Here is the next chromosome. ये दूसरा क्रोमोसोम है और इसकी ये आर्म, नॉन सिस्टर आर्म्स आर देयर. सो these are the नॉन सिस्टर आर्म्स. ये आर्म यहां से इसको ओवरलैप करेगी, और जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उस जगह पे जीन्स का एक्सचेंज, ठीक है, डीएनए मटेरियल इज गोइंग टू बी एक्सचेंज हियर. सो हियर the genetic material is going to be exchanged. ना जैसे ही यहाँ पे इस तरह से एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, and this is the enzymatic process. Which enzyme is going to take part in the process? That is recombinase enzyme. So here the recombinase enzyme is going to take part in the reaction, and the process of exchange of the genetic material is going to take place here. So now what are the changes takes place during the Pectine substage? That is chiasmata formation takes place, which is an enzymatic process. So the important process, that is chiasmata formation. So here chiasmata formation is going to take place, which is an enzymatic process, and which enzyme is going to take part in the process? That is recombinase enzyme. So here the recombinase enzyme is going to take part in the reaction. One more thing, that is crossing over takes place. So crossing over completed during the Pectine subphase. Clear? And by crossing over, what is the reason behind this crossing over? This is exchange of genetic material. Exchange of
genetic material. This exchange of genetic material leads to the variations. ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से क्रोमोसोम्स क्या है, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, नहीं, दे आर कमिंग इन कांटेक्ट विद लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स क्या है, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं. किस लिए आ रहे हैं? फॉर एक्सचेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल. दिस जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज लाइक दिस एंड दिस क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द वेरिएशंस इन स्पीशीज. ठीक है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशंस are there in the upcoming species, and these variations are due to the process that is called as crossing over. It is a very important process which takes place during the prophase 1 stage. Still there are two subphases are present, that is diplotin and diakinesis, and about these two subphases we will discuss in our next video. ठीक है, तो अभी आप इन तीनों subphases को अच्छे से देखेंगे, that is lactotin, zygotin and pectin. Two subphases are still there, that is diplotin and diakinesis. About these subphases we will discuss in our next video. Thank you very much.